Hi everyone, and welcome back to the official channel of LegalEdge. I hope I'm perfectly audible and visible to all, right? चलो, so let's start with our session. अब आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिस्कस करेंगे. Wherein recently the Central Information Commission observed that or ruled that BCCI is not a public authority under the RTI Act. ठीक है? And क्योंकि BCCI is not going to be considered as a public authority under the RTI Act, therefore आप RTI Act के अंदर उससे information claim नहीं कर सकते. Now the things which we'll be discussing about in our today's session will include कि हम पहले तो Right to Information Act को समझेंगे कि Act है क्या, what is the meaning of information over there, किस तरीके की information आप seek कर सकते हो, and secondly किससे आप वो information seek कर सकते हो. And another important thing that we'll be discussing is related to this recent verdict or the order which is issued by your Central Information Commission in this particular case. तो देखो, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बना कहां से? अब इवेंचुअली तो पार्लियामेंट ने उसके ऊपर एक लॉ बनाया, ठीक है, बट इंफॉर्मेशन को लेकर सबसे पहली बार डिस्कशन सुप्रीम कोर्ट में हुआ इन द केस ऑफ मिस्टर कुलवल वर्सेस जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन द ईयर 1986, ठीक है, wherein the Supreme Court recognized that when it comes to the effective exercise of the freedom of speech and expression by the citizens of this country, it is important that they must have access to the information as well. कि भाई लोग अपने स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कैसे ही एक्सरसाइज कर सकते हैं जब तक उनके पास वो इंफॉर्मेशन ना हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के ऊपर. And therefore the court recognized that right to information or right to know is an intrinsic part of Article 19(1)(a) of the Constitution of India. And that case, that judgment eventually led to the enactment of the Right to Information Act by the Parliament. So primarily the case was Mr. Kulwal versus Jaipur Municipal Corporation, wherein the court directed that the freedom of speech and expression provided under Article 19 of the Constitution clearly implies right to information, as without information, the freedom of speech and expression cannot be fully used by the citizens. कि भाई ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर आपको कुछ पता ना हो किसी चीज के बारे में तो आप उसके ऊपर अपने व्यूज को इफेक्टिवली कैसे ही एक्सप्रेस कर सकते हो. And therefore the court recognized that freedom of speech and expression will also include right to information or right to know as well. And therefore subsequently the parliament enacted the Right to Information Act in the year 2005. The primary objective with which this particular act was enacted was to empower the citizens of this country, to promote transparency and accountability in the functioning of the government, to contain corruption, and to enhance people's participation in democratic processes. These were the primary objectives with which the Right to Information Act was enacted. अब इस एक्ट के अंदर आप पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हो, बट व्हाट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन होगा क्या? So information is defined under section 2F of the Right to Information Act, and it says, or it means, any material in any form including records, documents, memos, emails, opinions, advices, press releases, circulars, orders, logbooks, contracts, reports, papers, samples, models, data material held in any electronic form, and information relating to any private body which can be accessed by a public authority under any other law for the time being in force will come under the category of information. तो आप गवर्नमेंट से या पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हो, बट उस इंफॉर्मेशन में आएगा क्या क्या? ये सारी चीजें किसी भी मटेरियल को चाहे किसी भी फॉर्म में रिकॉर्ड किया गया हो, which will include documents, memos, emails, opinions, advices, press release, गवर्नमेंट ने कोई सर्कुलर पास करा, कोई ऑर्डर है, लॉग बुक है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की, ये सारी चीजें आपकी इंफॉर्मेशन की कैटेगरी में आएंगी. एंड यही इंफॉर्मेशन आप गवर्नमेंट से सीख कर सकते हो, ठीक है. एंड यहां पर आपको एक राइट टू इंफॉर्मेशन दिया गया. अब राइट टू इंफॉर्मेशन को आप एक्सरसाइज कैसे करोगे? क्या आप डॉक्यूमेंट मंगा सकते हो? क्या आप उन डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हो? क्या आप उनकी कॉपीज अपने पास मंगा सकते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस राइट टू इंफॉर्मेशन? So information was defined under section 2F, but right to information is defined under section 2J of the RTI Act. And according to this act, right to information means or accessible under the act which is held by or under the control of any public authority and includes the right to inspection of work, documents or records, taking notes, extracts, certified copies,
taking certified samples of the material, obtaining information in the form of diskettes, floppies, tapes, video cassettes, or in any other electronic mode, or through printouts where such information is stored in a computer or in any other device. तो आपके पास एक्सेस करने का राइट है, आप इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो. एक्सेस करने के साथ साथ इट विल इंक्लूड योर राइट टू इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट, taking notes, extracts, or certified copies, taking certified samples of the materials, or taking the information in any of the electronic form which is available at that point of time. ये चीज आपके राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर काउंट की जाती है. बट आप इंफॉर्मेशन सीख किससे कर सकते हो? कैन यू सीक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्राइवेट बॉडी? द आंसर इज नो. राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 entitles the citizens of our country to seek information from a public authority. But then what is the meaning of public authority? What kind of authorities will come under the category of or will come under the ambit of the RTI Act 2005? So according to the RTI Act, a public authority means any authority or body or institution of self-government established or constituted by or under the constitution, by under any other law made by the parliament or the state legislature. So पहले तो दो bodies include कर दी गई, constitutional bodies and statutory body. Any such body which is established by the constitution of the country, any such body which is established by any law for the time being force in our country, that is something which will come under the category of public authority. Or it will also include any authority or body which by notification issued by or order made by the appropriate government, and includes any body which is owned, controlled, or substantially financed by the government, or non-governmental organizations substantially financed directly or indirectly by the funds provided by the appropriate government. ये सब आपकी पब्लिक अथॉरिटी की कैटेगरी में फॉल करेंगे. And you can seek information only from these authorities and not from anyone else. और यहां पर बीसीसीआई का इशू इसी पॉइंट से रिलेटेड था, that whether you can seek information from BCCI under the RTI Act or not. ठीक है. एंड प्राइमरी इशू वहां पर यही था कि whether BCCI will fall under the definition of public authority or not, कि पब्लिक अथॉरिटी की कैटेगरी में BCCI आएगा या नहीं आएगा. एंड दैट वाज द प्राइमरी थिंग व्हिच वाज डिस्कस्ड ओवर हियर, wherein the Central Information Commission dismissed an appeal to bring the world's richest cricketing body under the Right to Information Act. ठीक है. And the commission made it clear that the BCCI cannot be compelled to disclose internal information to the public under the India's transparency laws. ठीक है, कि आप BCCI को कंपेल नहीं कर सकते हो कि वो अपनी इंटरनल इंफॉर्मेशन सिटीजन्स को रिलीज करे अंडर द RTI Act 2005. पॉइंट था क्या, क्यों ये मैटर CIC तक पहुंचा एक्चुअली? सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट. दिल्ली के एक रेसिडेंट ने RTI एप्लीकेशन फाइल करी, raising 3 highly intuitive points from the BCCI. 3 चीजें उन्होंने वहां पर BCCI से पूछी. Under what authority does the technically private association select players to represent Team India? किस अथॉरिटी के अंडर? क्योंकि BCCI को अगर आप देखोगे तो BCCI is registered as a society under the तमिलनाडु Societies Registration Act. तो एक सोसाइटी के फॉर्म में रजिस्टर्ड बॉडी. तो पहली चीज जो उन्होंने BCCI से पूछने के लिए RTI फाइल करी वो ये कि किस अथॉरिटी के अंडर, from where you are getting the authority to select the players to represent Team India. That was the first question. The second question was, why do state governments provide public stadiums and police security to this private body? अभी भी अगर आप देखोगे तो जैसे IPL कल खत्म हुआ है ना, IPL में मैचेस में सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, प्लेयर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, टीम्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये सारी चीजें स्टेट गवर्नमेंट कर रही होती है. So therefore the another question which was asked by the activist was that why do the state governments provide security and public statement to a private body? Okay? And the third question which was asked over there was that does the government exercise any actual legal control over the cricket administration in the country? कि क्या गवर्नमेंट का किसी भी तरीके का एक्चुअल कंट्रोल है क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन? अब पॉइंट ये है कि अभी हमने देखा दैट RTI Act entitles the citizens to seek information from public authority. एंड पब्लिक अथॉरिटी बनने के लिए, आप पब्लिक अथॉरिटी के अंडर आने के लिए आपका उस सेक्शन 2H के अंडर जो क्राइटेरिया गिवन था उसमें आपका फॉल करना जरूरी होता है.
unless and until you are not falling within that definition, then the person cannot be entitled to seek information from you. अब RTI Act के हिसाब से public authority है क्या? So that is something which is given under section 2H of the RTI Act. So on the basis of creation, on the basis of control and on the basis of financing, इन 3 grounds पे किसी भी authority को public authority की तरह treat किया जाता है under the RTI Act. Establishment or creation, control and financing. Creation के basis पे क्या है? That the authority must be established or constituted by the constitution, parliament or state legislature. कि या तो कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टैब्लिश किया हो उस बॉडी को, या पार्लियामेंट के लॉ के थ्रू स्टैब्लिश की गई हो, या स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ बना के किसी अथॉरिटी को स्टैब्लिश किया हो, then the authority will come under the category of public authority. Similarly, any such authority which is owned or controlled by the government, तब आप उसे public authority कह सकते हो. Or any such body which is substantially financed by the public funds, including the NGOs as well. So if there is any NGO or if there is any body which is substantially financed by the public funds, then the authority will come under the category of public authority. तो public authority में आप अगर इन 3 में से किसी एक क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हो, तभी आप काउंट किए जा सकते हैं, and then only information can be sought from you. ठीक है, under the RTI Act. अब BCCI और RTI का रिलेशन ना पहली बार क्वेश्चन नहीं किया गया. This is not the first time that there were questions raised with respect to the relationship between BCCI and the RTI Act. ये डिस्कशन बहुत पहले से चला, ठीक है. सो जैसे 2018 में सबसे पहली बार इस चीज पे डिस्कशन होना स्टार्ट हुआ, wherein an earlier CIC bench, that is Central Information Commission bench, under M. Sridhar Acharyulu, ruled that BCCI was public authority, and simultaneously even the Law Commission and Lodha Committee both recommended to bring the board under the RTI Act. पहले CIC की एक बेंच ने 2018 में कहा कि BCCI को पब्लिक अथॉरिटी मानना चाहिए, looking at the kind of function which it actually performs. And then also the Law Commission and Lodha Committee also recommended that the body should be brought under the ambit of the RTI Act. But CIC की जो ये ruling थी ना, the Madras High Court set aside the 2018 CIC order, remanding the matter for fresh consideration based strictly on Supreme Court precedents. CIC के उस order को मद्रास हाई कोर्ट ने वहां पर उसके ऊपर स्टे लगा दिया, एंड ये कहा गया कि भाई आप इसको दोबारा डिसाइड करो as per the precedents which are set by the Supreme Court. And finally, in 2026, the new CIC order definitively rules that BCCI falls outside the statutory extension of the RTI Act. ठीक है, अब पॉइंट क्या है, 3 चीजों के बेसिस पर हमें डिटरमाइन करना है कि whether it is a public authority to be brought under the RTI Act or not. है ना, we have to judge according to the three grounds that whether the particular body will fall under the category of the public authority or not. So to reach its 2026 verdict, the CIC subjected the BCCI to a rigid test based on section 2H of the RTI Act, and the BCCI failed to trigger the statutory threshold on all the 3 grounds: creation, control and financing. Creation के basis पे देखें तो भाई point क्या है, the body should either be established by the constitution or a statute passed by the parliament or the state legislature. बट यहाँ पे अगर हम BCCI को देखें तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टैब्लिश किया, क्या पार्लियामेंट के किसी लॉ ने उसको स्टैब्लिश किया, या क्या किसी स्टेट लेजिस्लेचर के किसी लॉ ने उसको स्टैब्लिश किया? नहीं. द BCCI इज फॉर्मली रजिस्टर्ड अंडर द तमिलनाडु सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1975. एक सोसाइटी के फॉर्म में, ठीक है, एक सोसाइटी के फॉर्म में वो तमिलनाडु रजिस्ट्रेशन ऑफ और तमिलनाडु सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1975 के अंडर एक रजिस्टर्ड बॉडी है. अब भाई अगर कोई कंपनी रजिस्टर हो जाती है कंपनीज एक्ट के अंदर, तो क्या वो लीगल बॉडी बन जाएगी, क्या वो स्टैट्यूटरी बॉडी बन जाएगी? नहीं, है ना. अगर मैं एक एनजीओ बना देता हूँ और मैं उसको गवर्नमेंट के FCRA के अंडर रजिस्टर करा दूं, तो क्या मैं एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन जाऊंगा? आंसर इज नो, राइट. सो द पॉइंट वाज कि क्योंकि सिर्फ तमिलनाडु सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर BCCI रजिस्टर्ड है, दैट इन इटसेल्फ विल नॉट कंसिडर और मेक द बॉडी एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. And that is the argument which is given by the CIC as well, that registration grants legal recognition, not statutory status. The RTI Act distinguishes between a body explicitly created by a statute and a body merely governed under a statute after private citizens decides to form it. तो अगर हमने कोई बॉडी बनाई और उसको रजिस्टर कराया,
दैट डज नॉट मीन कि हमारी बॉडी एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन जाएगी, फिर दैट विल रिमेन एज अ प्राइवेट बॉडी। सो क्रिएशन के बेसिस पे सीआईसी ने कहा दैट बीसीसीआई कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, तो पहला ग्राउंड तो नहीं है। दूसरा ग्राउंड है कंट्रोल, दैट इफ द बॉडी इज सब्सटैंशियली कंट्रोल्ड और ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, then the authority can be considered as a public authority, or then the body can be considered as a public authority. But the point ये था कि क्या बीसीसीआई गवर्नमेंट बीसीसीआई को रेगुलेट कर भी रही है। ठीक है, अब पॉइंट क्या है, देखो बीसीसीआई की चाहे इंटरनल कमिटीज हो, टीम कमिटी हो, डीपीसी कमिटी हो, पार्टनर कमिटी हो, बोर्ड कमिटी हो, इन सारी कमिटीज के जो मेंबर होते हैं ना, दे आर इंटरनली इलेक्टेड ऑफिस बेयरर्स एंड देयर आर 0 गवर्नमेंट नॉमिनीज ऑन इंटरनल कमिटीज, and moreover no governmental approval is required for board decisions. बोर्ड के डिसीजन के लिए किसी भी तरह के गवर्नमेंटल अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब 2013 के सुप्रीम कोर्ट का एक प्रेसिडेंट है थलपलम केस का, wherein the court stated that the control must be substantial and pervasive over the management, policy and finances, not merely regulatory supervision. गवर्नमेंट सुपरवाइज कर रही है इतना जरूरी नहीं है to come under the category of the control or owned by the government. It is important that the control of the government must be substantial and pervasive in nature. But यहाँ पर जो बीसीसीआई की फंक्शनिंग को हम देखते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तो कोई उसमें लेना ही देना नहीं है। पॉलिसी डिसीजंस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई कंट्रोल नहीं है, तो फिर किस बेसिस पे हम कह सकते हैं दैट द बॉडी इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट? तो ये ग्राउंड भी कैंसिल आउट हो गया। तीसरा ग्राउंड जो बचा था दैट वाज अबाउट सब्सटैंशियल फाइनेंसिंग। सो इफ द बॉडी इज substantially financed by the government of India, ठीक है, then the body will come under the category of public authority. अब substantial finance के लिए लेकर जो आर्गुमेंट यहाँ पर दिया गया वो ये था that does the use of public stadiums and police deployment equate to public funding? कि भाई पब्लिक स्टेडियम आप यूज कर रहे हो, ठीक है, पुलिस डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है आपके 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 इवेंट्स के टाइम पे, तो क्या उस बेसिस पे हम ये मान लें दैट यू आर बीइंग सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट? सीआईसी ने वर्डिक्ट दिया नो, देयर इज नो सब्सटैंशियल फाइनेंसिंग। क्योंकि सब्सटैंशियल फाइनेंसिंग का मतलब क्या है? सब्सटैंशियल फाइनेंसिंग रिक्वायर्स फंडिंग सो सिग्निफिकेंट दैट द बॉडी वुड स्ट्रगल टू एग्जिस्ट विदाउट इट and incidental benefits or tax exemptions do not qualify. Furthermore, under the National Sports Governance Act of 2025, the BCCI receives 0 government grants. ठीक है, सब्सटैंशियल फाइनेंसिंग का मतलब क्या है कि इस तरीके का फाइनेंशियल आपको फंडिंग दी जा रही है, ठीक है, सो सिग्निफिकेंट दैट द बॉडी वुड स्ट्रगल टू एग्जिस्ट विदाउट इट, कि अगर वो फंडिंग बंद कर दी जाए तो उसके बाद बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी, बॉडी स्ट्रगल करने लगेगी अपने खुद के एग्जिस्टेंस में। अब पब्लिक फंडिंग या पुलिस मतलब पुलिस डिप्लॉयमेंट या पब्लिक स्टेडियम्स को अगर आप हटा दो तो क्या बीसीसीआई स्ट्रगल करने लगेगी इवन फॉर द पर्पसेस ऑफ एग्जिस्टेंस? ऐसा भी कुछ होगा नहीं, है ना, क्योंकि बीसीसीआई के अगर रेवेन्यू स्ट्रीम्स को हम देखें तो गवर्नमेंट से कोई ग्रांट नहीं मिल रहा उन्हें, एंड द प्राइमरी रेवेन्यू स्ट्रीम्स इंक्लूड्स मीडिया राइट्स, स्पॉन्सरशिप, ब्रॉडकास्ट एंड टिकट सेल्स। इन्हीं सब चीजों से वो अपना रेवेन्यू जनरेट कर, एंड अगर पब्लिक स्टेडियम्स दिए जा रहे हैं या पुलिस डिप्लॉयमेंट हो रहा है तो दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज सब्सटैंशियल फंडिंग एज सच। व्हाई? बिकॉज़ सब्सटैंशियल फंडिंग वुड मीन दैट काइंड ऑफ अ फंडिंग विदाउट व्हिच द बॉडी वुड स्ट्रगल टू एग्जिस्ट। अब एग्जिस्टेंस के लिए तो यहाँ पर कोई स्ट्रगल हो ही नहीं रहा है, तो फिर कैसे हम यहाँ पर उसको 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 पब्लिक अथॉरिटी की कैटेगरी में लाएं? ऑन दी अदर हैंड, जैसे देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चाहे बात करते हैं, पार्लियामेंट के एक्ट से बना, गवर्नमेंट अपॉइंटेड बोर्ड होता है, गवर्नमेंट बैक फंडिंग है, राइट, बट यहाँ पे तीनों चीजें बीसीसीआई के में मिसिंग है, एंड देयरफॉर द सीआईसी ऑर्डर दैट द बीसीसीआई इटसेल्फ कैनॉट बी कंसिडर्ड एज the BCCI in itself cannot be considered as your public authority जिसके बेसिस पे आप RTI के अंडर उनसे इंफॉर्मेशन सीख कर पाओ। So the 2026 CIC ruling cements the reality that the world's richest cricket board remains a private club in the eyes of India's statutory transparency law, that is the RTI Act. But while constitutional courts retain the power to step in during cases of gross mismanagement or arbitrary action, everyday transparency regarding selection, administration, internal policy remains entirely at BCCI's discretion. अगर मिसमैनेजमेंट होना शुरू हो जाए
तो मिसमैनेजमेंट के अंदर भाई हाई कोर्ट्स 226 के अंडर ज्यूरिसडिक्शन ले सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट्स आर एंटाइटल्ड टू टेक द ज्यूरिसडिक्शन और कंसीडर द ज्यूरिसडिक्शन एंड डिसाइड द मैटर इन केस ऑफ ग्रॉस मिसमैनेजमेंट। वहां पे तो आप फिर भी उस चीज को स्टेट की कैटेगरी में मान सकते हो और माना भी गया है पहले, ठीक है। बट ट्रांसपेरेंसी लॉज के लिए, आरटीआई एक्ट के लिए बीसीसीआई कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ स्टेट फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस लॉ, ठीक है। दिस वाज समथिंग व्हिच वाज मेड क्लियर बाय द सीआईसी रिसेंटली एंड दिस वाज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द पर्पसेस ऑफ योर पेपर। आई होप द टॉपिक इज क्लियर। आरटीआई एक्ट को थोड़ा सा अच्छे से रीड करके रखिए। राइट टू इंफॉर्मेशन इज बीइंग डिस्कस्ड एट मल्टीपल प्लेसेस आर्टिकल 19(1) के अंडर। दैट इज समथिंग व्हिच बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पसेस ऑफ योर पेपर, ठीक है। बाकी आई होप द टॉपिक इज क्लियर, ठीक है। रेस्ट, तबीयत वगैरह का ध्यान रखो, आराम से पढ़ाई करो एंड विल मीट सून, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।